Okay, so let's begin. So as I said earlier, having a good portfolio and having a good CV is very important. And so let's begin. So my question from everyone is, how many of you are on LinkedIn and Behance? Behance is for those who work related to graphics, and generally LinkedIn is for everyone. So you can either reply on mic or you can type it as well if you're not comfortable. Okay, Atika is on LinkedIn. What about the rest? If you are not on LinkedIn or any such website, you can still say no or anything so that I know. I have LinkedIn, but it's not updated. Okay, great. What about the rest? Okay, you have both. That's great. Okay, so let's start with LinkedIn. And LinkedIn is one of the most popular sites for professional connections and building your network. So we will first discuss LinkedIn and then we will go towards Behance. So starting with LinkedIn. So today we will be covering about profile building on social sites, which is LinkedIn and Behance. Then we will go through your resume building and then personal blogging. This is a sample profile. One of them is mine and the other one is my friend's. So the most important thing which you can do is to stay as professional as possible. So as you can see, you can have a professional profile picture. It should be straight picture, like it shouldn't be any side angle. It should be your face and very visible so that whoever visits gets a professional look. And then your cover photo can also be very useful. You can add your organization or your institution from where you studied. And you can also write a quote on your cover photo, so it gives a good feel and tells more about you. Maybe some of the people don't read text below. They might read a quotation or something above your picture. So you can add something very subtly. Apart from this, I added some logos where I worked or from where I studied or something. So that's something you can do. Apart from this, going forward, so experience is very important. So you have to list down every work you did. इसमें जो लोग उर्दू में ज्यादा कंफर्टेबल हैं उनके लिए भी मैं साथ साथ बताता चलूं. सो आपने जहां भी काम किया हुआ है आप सब कुछ ऐड करें. बेशक आपने एक महीने के लिए कहीं इंटर्नशिप की है वो भी आप डालें, एंड जहां आपने ज्यादा अरसे के लिए काम किया हुआ है वो भी डालें. अच्छा, इसमें आप नीचे अपने स्किल्स भी ऐड कर सकते हैं. यू गाइस कैन ऐड योर स्किल्स सो दैट व्हेन समवन सर्च अबाउट एनी ऑफ दीज स्किल्स, सो योर प्रोफाइल कैन पॉप अप, एंड दिस इज कॉल्ड लाइक काइंड ऑफ अ SEO for LinkedIn. Like if someone is kindly mute yourselves. Okay. So, for example, if someone search graphic designing or social media marketing, then your profile will also be in the search. So add a lot of keywords in your profile experience, and you can also add different kind of experiences, including internships. Then coming to your education, you can mention about your GPA, your activities which you did during your university. Then another thing which people do a lot is add their certifications and licenses. So if you have done any online courses or any thing online, you can list down those certifications and licenses so that it gives a look on your profile that you have done these courses and you have the skill which you have learned from these courses. Then you can also add volunteering, and then you can add details in them as well. So this gives a overall good look to your profile. Going forward,
you can add your skills here as well. So you can group them like through project management. You can get endorsements from your friends, from your fellows or your colleagues, and then they can give you reviews as well, as you can see here. So this adds authenticity in your work, and that's something you can do as well. So this will give a good look on your LinkedIn profile and help you engage better with different people on LinkedIn. And lastly, you can add your courses, your awards, honors, languages, test scores as well. So let me give a look from my screen as well. So, so this is how the flow of your profile can look. You can get inspiration from any other profiles as well. So I just showed another one of my friend as well earlier. So this is another example, and this is something you can follow as well. Add all the experiences, whether you have done for a short period of time. So this is the entire experience section. Like he worked 2 months, 2 months, 3 months, 2 months. So don't hesitate on adding stuff which was for a short period of time, but you can add a lot of other things as well, such as your projects, courses, awards, and etc. So if someone have any question related to this, or if someone haven't done this or have already done this, you can share by mic or by comments. And if you have any question, you may ask as well. Otherwise, we can move forward. Okay. I guess we can move forward. Okay. So another thing in LinkedIn is to engage. So yes, Hamza, आपका सवाल है, आप पूछ सकते हैं. अच्छा, मैंने जो है यहाँ पे बनाया हुआ था, लेकिन क्योंकि मैं पहले जॉब करता था, मेरे उसकी प्रोफाइल बनी हुई है। और कंसीडरिंग के जो आपने पोर्टफोलियो की बात की है, सीवी की बात की है, तो मेरी सीवी ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन मेरी रिलेटेड टू माय अकाउंट्स फील्ड बनी हुई है। तो अगर मुझे नई बनानी है, या मैं प्रोफाइल नहीं बनाऊंगा, या मैं उसमें एडिशन कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो पुरानी सीवी पड़ी है वो मैं आपसे शेयर भी कर लूंगा। तो मुझे आप बता दीजिए, क्योंकि मैंने कैनवा पे बनाई थी, तो आप मुझे वो गाइड्स पे कर दीजिएगा कि उसमें मैं कैसे एडिशन करूँ और किस तरह से वो बेहतर लगेगा। सही है. अच्छा, सो हमने ये अभी लिंक्डइन किया है, सीवी और रेज्यूमे इसके बाद उस पर आएंगे. सो लिंक्डइन पे तो आप सारी फील्ड्स की इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, बेशक फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, कोई आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया है, कोई आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, आप वो सब कुछ एक ही जगह में ऐड करेंगे. जब आप सीवी बनाएंगे, वो इसके बाद में नेक्स्ट जब इस प्रेजेंटेशन में आगे चलकर सीवी पर आएंगे, तो मैं उस पर आपसे शेयर कर दूंगा अपना एक्सपीरियंस, एंड देन आपका उसके ऊपर कोई फॉलोअप क्वेश्चन अगर हो, सो आप वो पूछ सकते हैं. Won't the recruiter have a bad impact of us if you work for a job for only 3 months? They'll think you won't long last, no? Okay, so in CV, yes, I would recommend to pick and choose, because in CV you make a CV just related to that specific job, which I would cover in the next part. But on LinkedIn, adding everything you did can actually add a positive impact, because it will add that you have a lot of experience and you are versatile in your work. But in CV, because CV is something you are applying just for a specific job, then yes, you don't have to add irrelevant stuff. So I would be touching that in after a little while. So then you can, if you have any question, then I can answer that as well. Then okay, let's move forward. Okay. So apart from profile building, another important thing is to engage on LinkedIn as well. So often people do is that they post the same kind of content which they are posting on other social media sites, which is kind of wrong, and that's not what LinkedIn is supposed to be used for. LinkedIn is for professional building, professional networking. So you need to add content which is related to your career or professional growth, or something related to your professional career. So that's something LinkedIn is for, and you should often regularly post about that as well. So some of the things which you can post on your LinkedIn profile is, or LinkedIn feed is, engaging content related to your career or academics. You can also post engaging content about the industry. For example, as you all know today,
Meta launched a new social media app called Threads, which is a competitor for Twitter. So you can comment on that on your LinkedIn feed and share what's your opinion on that, or some related to other tech related news, or something from the automobile industry that's related to your interest. So you can post such things on LinkedIn with a personal opinion and overall impact on the industry. Apart from this, Faizan, yes. sorry to cut you off. I wanted to ask that I really post about cricket on LinkedIn, so it's better to post in there. Yeah, थोड़ा unprofessional लगता है because I really talk about cricket and my experiences also as a cricketer writer. So it's a bit unprofessional. Yeah, you are talking about cricket on that side, or it's okay. Look, it depends on what you're posting about sports. If you're posting about overall, like discussion on what should be the outcome of Ashes, or discussion about the controversy of Johnny Bairstow, then it's kind of irrelevant for LinkedIn audience. But if you're talking about generally the sports industry, the influence of Saudi Arabia and sports, something about the industry in a bigger picture, then it's kind of fine. And even if you're writing as a sports writer or a sports professional, then it's also fine, because if it's relating to your career, if it's about your personal growth, if you're an athlete and you're sharing about some achievement, then it's perfectly fine. But as a commentator, as a sports enthusiast, posting stuff about ongoing current happenings in sports, then I think it's kind of not the right platform for you to post about it. I hope I have answered your question. Yes, thank you so much. Okay. So as I shared few examples. So this person shared about his commerce summit in Phuket, and he shared overall insights. And you can write long posts on LinkedIn as well, and sharing the overall impact you created, what kind of connections you made, what you learned. So you can share an experience kind of thing, a story kind of thing on your feed, and a lot of people engage with it. This is my post. I was selected for a scholarship, so I wrote about that. So a lot of people engage. 1463 impressions is pretty high for my profile, because I usually don't get much impressions. So if you kind of share your career achievements, people do react, and you get a lot of traction on that. So LinkedIn is one of the sites which you can use differently from other social media sites. For example, Twitter. Twitter is mostly for discussing different kind of news, comments on sports, politics, and everything. So LinkedIn is more like professional, and you should be using it as well. Going forward, this is specifically for all those who are interested in graphic designing and are starting a career in graphics. So this is something which you can use. This platform is very friendly for those who have different portfolios and different clients, and a lot of people are using. So this profile is Sohail Salams, who also talked to you earlier in the first session. So I will be jumping to the actual website and share the look and feel of this website. So this is his portfolio on Behance. And so in this platform, what you can do is you can make folders, and each folder then expands into different graphics. So for example, this is his work for Lahore Calendars for Pakistan versus New Zealand series. So now this folder contains a lot of graphics. So you can display your work in this way, so that if some client is interested in your work, he or she can view your work in this way, and it will give a good professional feel as well, that you have worked with a good organization and your work is pretty visible for everyone to see. So this is for a specific series. Then maybe if we go back and see something else, for example, let's look at this. So this is about Misbah Haq, the cricketer. It was a poster on him.
And what you can do is you can also post different dimensions of a specific post as well. So this is for a lock screen. This is more of a website, or this is also for a lock screen, and this is a square shaped graphic. So he shared three kind of dimensions of the same post. So if someone wants to see, they can do that as well. So there are a lot of different movie posters, for example. You can show different kind of versatility of your work in on this platform. So so you can like display your work on this platform, and it's pretty easy to upload here. And if we go on the homepage of this platform, you can browser the work of a lot of people. So we can, if we want to check the work of someone related to, for example, fashion industry. So now I will see projects of a lot of people who worked in this industry. And if I like someone's work, I can like it or approach them. So it's pretty easy to use, and it's compatible with Facebook and Google. You can just sign in and start making your profile. My profile is pretty basic, but just for sharing, I haven't been active on on this from a long time, but this is my portfolio. I worked on the COVID graphics, and these are some insights which I posted during the COVID. So you can, whatever you make, just keep on adding everything here so that it's getting saved as well. And you can also share it with other people as well. So that's something you can do, and it's pretty convenient and easy for everyone to make. It's not a hard task. So that's about Behance. Then going forward, personal blogging sites. So this is something which is optional, and it's not for everyone, because it depends on whoever is interested in blogging. So if you like to write a lot, so what I can recommend you is, one thing is that you can write for a platform, like for example, a lot of writers are writing for Green Team, the Sportanic, but there are a lot of things which are not related to sports, right? If you want to talk about some politics or some economy or some other field, you don't have a platform to write, but you are very passionate about writing. So what you can do is you can start your own microblogging or blogging site. But before we go there, let me show you how the writer profiles are on Green Team, just to show how a portfolio looks like on Green Team. So Anas might be here on this call as well, if I'm not wrong. Yes, he is. Oh no, one second. I added the wrong URL. One second. Let me Google. Yes, here it is. So this is portfolio of Anas Chishti. So all of our writers have this portfolio on our website as well. So these are all the articles which Anas wrote over the years. So they are listed down here. So for example, now Anas gets an opportunity with an international cricket blogging website. Just for an example, let's assume Cricinfo, right? So they ask Anas, show us your profile, your portfolio. So Anas can simply share this link, and they can read out everything which Anas wrote over the years. And it's pretty easy for him to share. And similarly, everyone can view and appreciate and acknowledge his efforts as well. So his profiles are also linked here. So it gives him an opportunity to showcase his writing abilities through this portfolio. Coming back to the blogging, which I talked earlier. So during COVID, I just learned how to make websites through an online course, and I made this website on my own using help of some friends. But mostly initially, I started it on my own. So this is kind of a CV website, but I have also started writing for my own website as well, which is helping me like make my own portfolio as well. So this is a one-pager website. So this is about me.
these are my skills. So it's like kind of LinkedIn, but just tailored to my needs. Then I also added my YouTube videos here, which you can also do for your personal growth and promotion. You can add your educational environment on such websites, your experience. You can add logos. Obviously, if you don't have this skill, you can make it, but just for an idea, I'm sharing this. And then you can write blogs as well. Like recently, I just published a blog on 4 tips to maximize your personal growth. This is a new blog, which you can also do for your own self. So making this website is obviously not free because you need to buy the hosting and domain and everything. If you are interested, I can talk about that one day. But there are a lot of free websites where you can start your own profile. For example, there is Wix. Forgot the name. Yeah, I think it's Wix. So there are a lot of such websites. So you don't have to buy anything. You just can design your own landing page for free, and you can just build it, and they have ready-made tools and you can design for free. Obviously your website name would be .wix.com, but for your own like profile building, it's something which is easy to do and you can do it. And if you are interested, we can go in detail of such sites in another session. But just for an overview, if you can answer in the comments, have you guys used WordPress? Or do you know about WordPress? Yeah. Okay. What about the rest? If no, you can like mention it as well. Zorez. बस नाम सुना हुआ है. ठीक है. अच्छा, मैं बेसिक से बता देता हूँ सब लोगों को. सो वर्डप्रेस इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म्स भी हैं, बट वर्डप्रेस इज द मोस्ट कॉमन वन. इसमें आपको ये होता है कि आप बैक एंड होती है आपकी वेबसाइट की. इसमें एक पार्ट तो ये है कि आपको डिजाइन और सारी चीजें इस पे आप कर सकते हैं वेबसाइट को. बट अगर आप बनी बनाई वेबसाइट भी आपके पास आ गई है एंड आपको टेक्निकल कंप्यूटर साइंस वाली चीजें नहीं पता, प्रोग्रामिंग नहीं पता, तो इस स्टेज पे भी वेबसाइट को आप रन कर सकते हैं. इतना मुश्किल नहीं होता. सो ये आपका डैशबोर्ड है. इसका मैं बेसिक्स आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि बहुत दफा जॉब्स में भी यूँ होता है कि आपको बनी बनाई वेबसाइट्स को सिर्फ सिर्फ मैनेज करना होता है. ठीक है. सो ये आपका डैशबोर्ड हो गया. एंड मोस्टली आपको कुछ जो चीज़ें करनी होती हैं वो होती हैं बैक एंड पे ब्लॉग पोस्ट करना, या मैं ग्रीन टीम का दिखा देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा. सो यू कैन लाइक आप कर सकते हो मैनेज, इतना मुश्किल नहीं होता. मैं दिखा भी देता हूँ, एक सेकेंड खुल जाए. ठीक है, आ गया. हाँ, बिल्कुल हमजा ने भी कहा वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है. ठीक है, वो है एक एस्पेक्ट वो है, बट एक फ्रंट एंड पे भी वर्डप्रेस यूज किया जाता है. अब फॉर एग्जांपल ये ग्रीन टीम की वेबसाइट है. ठीक है, ये ऑल पोस्ट हैं ग्रीन टीम के, जो जितने आर्टिकल्स हमने पोस्ट किए हैं. ठीक है, अब ये उनका बैक एंड है जहाँ से हमने आर्टिकल की इंफॉर्मेशन ऐड की थी. सो ये जितने आर्टिकल्स हैं हमारे 656 आर्टिकल्स पब्लिश हुए हुए हैं इस वेबसाइट पे. और ये यहाँ से एडिट भी हो सकते हैं. अगर न्यू आर्टिकल ऐड करना हो यहाँ से होता है. एंड अगर न्यू भी करना हो, इतना कोई मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड वर्डप्रेस होता नहीं है. आप ऑनलाइन बेसिक कोर्सेज भी कर सकते हैं. बेसिकली 2-3 हफ्तों में आप वो सीख भी सकते हैं. बट मैं आपको ओवरऑल एक फील दे रहा हूँ, क्योंकि अब एक सेशन में कितना ही आपको सिखा सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल आपने आर्टिकल लिखा है पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप स्केड्यूल. ठीक है, अब यहाँ आप टेक्स्ट डालेंगे, जो भी आपका टेक्स्ट होगा. एंड आप इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ट्विटर से अगर कोई ट्वीट ऐड करनी है आपने, वो आप यहाँ इंसर्ट कर दें. या आप कोई इमेज डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं. सो यूँ आप चीज़ें डाल सकते हैं. एंड देन आप इसका एसईओ वगैरह भी कर सकते हैं. एसईओ पे हमने एक और सेशन रखा हुआ है आगे जाके, तो वो उसमें ये सारी चीज़ें ज़्यादा डिटेल में आपसे शेयर करूँगा. बट ओवरऑल लाइक इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. अगर आप थोड़ा बहुत भी सीख लें तो यू कैन रन अ वर्डप्रेस
प्लेटफॉर्म मतलब जिसमें ब्लॉग्स और सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, वो इतना मुश्किल काम नहीं है। सो ये आपका ओवरऑल हो गया। एंड इसी तरह अगर आपकी अपनी पर्सनल वेबसाइट है, तो आप अगर फर्स्ट टाइम किसी से बनवा भी लेते हैं वेबसाइट, तो आप इतना हो कि आप खुद अपलोड कर सकें एंड मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। सो दैट समथिंग द मेन गोल, ताकि आप सेल्फ सफिशिएंट हो। ठीक है, सो ये आपका हो गया। ये मैंने अपनी साइट का स्क्रीनशॉट इसमें ऐड किया हुआ है। सो अब गोइंग टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन विच इज सीवी और रेज्यूमे। सो रेज्यूमे एंड सीवी तो हर किसी की होती है। फर्क रेज्यूमे एंड सीवी में एक बड़ा ये है कि रेज्यूमे इज काइंड ऑफ अ वन पेजर एंड सीवी इज लिटिल लॉन्गर, बट हम रेज्यूमे पे ज़्यादा फोकस रखेंगे इस सेशन में। सो before we go towards the examples of resume or CV, एक स्टार मेथड होता है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। सो जो भी आप एक्सपीरियंस शेयर करते हैं किसी भी सीवी में, आप हर एक्सपीरियंस को ना स्टार अप्रोच या स्टार मेथड के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जांपल आप बात करें कि मैंने काम किया है, आप फॉर एग्जांपल आप में से कोई नेस्ले में काम कर रहे हैं, ठीक है। इफ यू आर वर्किंग एट नेस्ले, so and you have to mention it in your CV. So what you can do is you list down your job description, job role, actually not description, and then under it you will write 4 bullet points. The first one would be situation, like what situation, what tasks were given you. The second one is what tasks were given to you, then what action you did, and then the fourth point would be what result you achieved through your action. So इस स्टार को माइंड में रखें, एंड अब जब मैं सीवी आपको दिखाऊंगा तो फिर उस पे हम फोकस करते हैं। ठीक है, अच्छा ये मेरी सीवी है, इसको मैंने काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं किया हुआ, बट इसमें काफ़ी कुछ हमें मिल जाएगा आज के सेशन के हवाले से। सो फॉर एग्जांपल अब मैंने इसमें अपना वर्क एक्सपीरियंस ऐड किया है, ठीक है। सो कंटेंट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, ये मेरी हेडिंग हो गई, विच इज़ माय जॉब रोल। अब इसके नीचे मैंने कंपनी का नाम लिख दिया है एंड वो बता दिया है कि कब से कब काम किया है। अच्छा, एक चीज़ सीवी में ये होती है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने इस तरह ये लिखा है ना, तो मेरे सारी हेडिंग्स ना एग्जैक्ट सेम फॉन्ट साइज सेम मेथड पे होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि मैं अब नेक्स्ट कंपनी का नाम मैं इधर ऊपर ग्रीन टीम लिख दूं और डिजिटल मार्केटिंग लीड ऊपर नीचे कर दूं। जिस तरह लिखा हुआ है, जिस तरह डेट्स लिखी हुई है, सब उसी फॉर्मेट पे होना चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। खैर, जो स्टार मेथड की मैंने बात की थी, अब इसमें स्टार ये आ गया सिचुएशन। सिचुएशन ये है कि मैं कंटेंट राइटिंग कर रहा हूँ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स पर, ठीक है। और इसमें अब जो नेक्स्ट है टास्क, मुझे ये मिला कि मैंने कंटेंट जनरेशन करनी थी, स्ट्रैटेजी बनानी थी, और इसमें विजुअल्स एंड वीडियोस बनाने थे। और ये भी टास्क हो गया, विच इज़ पब्लिशिंग कंटेंट ऑन वर्डप्रेस। फिर मेरी जो वो है एक्शन है, अच्छा हाँ, दिस इज माय एक्शन विच इज पब्लिशिंग कंटेंट ऑन वर्डप्रेस, एंड देन दिस इज द रिजल्ट। सो रिजल्ट ये था कि मेरी एफर्ट्स के थ्रू 100% ग्रोथ आई फेसबुक एंड लिंक्डइन फॉलोइंग में। सो दिस इज STAR, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। सो स्टार अप्रोच जब करेंगे तो इससे पता चलेगा कि आपकी एफर्ट से क्या चीज़ अचीव हुई है। सो ये थोड़े से एडिशनल टास्क मैंने इसमें एंड में ऐड किए हुए हैं। Similarly, if we look at this again, situation ये थी कि I had 12 clients. Then task was to create visuals and graphics for those clients. फिर मेरा एक्शन ये था कि मैं उनके लिए एड्स रन कर रहा था, एंड दूसरा एक्शन ये था कि मैंने ये सेटअप किया, एंड उससे ऐसा जिसमें इस केस में रिजल्ट नहीं था, बट क्योंकि मेरे पास कोई इंसाइट्स नहीं थे इस केस में, बट इसमें आप बस अपना और इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं कि आपने क्या ओवरऑल काम किया क्लाइंट्स के लिए। सो ओवरऑल आप कोशिश किया करें रिजल्ट्स भी साथ ऐड किया करें। मेरे इस केस में कोई रिजल्ट उस तरह मुझे नहीं था, क्योंकि मैंने सिर्फ 6 मंथ्स के लिए काम किया था। अब जैसे ग्रीन टीम है, इसमें रिजल्ट ये है कि जितना अर्सा मैंने काम किया उसमें 300 से 1 मिलियन फॉलोअर्स बढ़ गए।
डिफरेंट चीज़ों में। अब आप फॉर एग्जांपल, ये मैंने काम किया क्रिएटर्स लैब में, विच वाज अ मार्केटिंग एजेंसी। सो इसमें 100 के फॉलोअर्स आए हमारे क्लाइंट के। सो इस तरह आप डिफरेंट चीज़ों को क्वांटिफाई करके लिख सकते हैं थ्रू स्टार अप्रोच। अच्छा, ये आपका सेक्शन हो गया वर्क एक्सपीरियंस का। ऊपर आप छोटा सा बता सकते हैं अपने बारे में डिस्क्रिप्शन, या आप अपने सोशल बता सकते हैं, या अपनी एजुकेशन बता सकते हैं। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं, वो स्कूल से स्टार्ट करते हैं, बहुत लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं होता आपके जीपीए तक में। सो कोशिश किया करें इररेलेवेंट एजुकेशन ना ऐड किया करें। सो अगर आपने बहुत ही बताना है तो आप अपनी OAN लेवल्स का बता सकते हैं, या इंटरमीडिएट का बस हल्का सा जिक्र कर सकते हैं। बिल्कुल स्कूल का नाम और इन चीज़ों में ना पढ़ें, क्योंकि वो स्पेस लेते हैं, वी हैव लिमिटेड स्पेस। फिर आप सॉफ्टवेयर एंड टूल्स में अपने सॉफ्टवेयर एंड टूल्स बता सकते हैं। अच्छा, आपने जो जो चीज़ें यहाँ बताई हैं ना, ये सब चीज़ें आपकी वर्क एक्सपीरियंस में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ सब कुछ लिख दूँ और यहाँ उसका कोई भी जिक्र ना हो। अगर मैंने यहाँ वर्डप्रेस का जिक्र किया है तो यहाँ वर्डप्रेस है, अगर मैंने गूगल एनालिटिक्स का जिक्र किया है तो यहाँ गूगल एनालिटिक्स है, यहाँ अगर मैंने टैबलो का जिक्र किया है तो यहाँ मैंने टैबलो का जिक्र किया हुआ है डेटा एनालिसिस से रिलेटेड। मैंने एग्जैक्टली वर्ड का यूज किया है। सो खैर मुझे अब वर्ड मिल नहीं रहा, बट जनरली इट रिफ्लेक्ट्स कि मैंने डेटा एनालिसिस में काम किया है। ठीक है। फिर इसके अलावा आप अगर वीडियो एडिटिंग की बात करें तो फाइनल कट प्रो इज अ सॉफ्टवेयर फॉर वीडियो एडिटिंग। सो इस तरह यू हैव टू add tools and softwares which is reflecting your work experience, and then other experience में आपके internships and बाकी चीज़ें आ जाती हैं। अब coming back to the question which two of you asked, एक हमजा थे और एक और थे, I forgot the name, so let me check the name. Okay, कहाँ गया? Acha, it was a question. Sorry, I forgot. Khair. Here, the question was that should we add everything on our CV? No. So if I'm applying for a sports job, तो फिर मैं इनमें से ना मार्केटिंग की चीजें हटा दूंगा, ये सब मैं हटा दूंगा, और मैं सिर्फ वो चीजें रखूंगा जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। जैसे दिस इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, दिस इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, इनको मैं ऊपर ले जाऊंगा। और अगर मेरे पास कोई जगह बची तो फिर मैं थोड़ी सी रिलेटेड चीजें डाल सकता हूँ मार्केटिंग की, जो स्पोर्ट्स मेरी जॉब से रिलेटेड है। और फिर मैं इन सब की वर्डिंग भी उस लिहाज से चेंज करूंगा रिलेटेड टू व्हाट आई एम अप्लाइंग फॉर। अगर मेरी फाइनेंस रिलेटेड जॉब है तो मेरी जो स्पोर्ट्स रिलेटेड वो है। क्या बात कर रहे थे, मेरा कट नहीं थी, मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। सॉरी, समझ नहीं आई मुझे, आप लिख लें अपना कमेंट, अब आपकी शोर आ रहा था। खैर, दूसरा ये है कि आप इसमें जिस चीज़ से रिलेटेड करें उस चीज़ से रिलेटेड ही चीज़ें ऐड करें। सो ये आपका उसमें सीवी में आ गया। एंड दूसरा ये है कि कोशिश किया करें रेज्यूमे एक पेज पर आए। अब जहाँ तक बात है आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीवी, अब ये ऐसी सीवी है जो आप डिफरेंट मल्टीनेशनल्स में इस तरह की भेज सकते हैं। बट कुछ सीवीज होती हैं जो आपको इतनी ज़्यादा कलरफुल और कॉलम्स की तरफ नहीं जाना होता। आप ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है। इफ़ योर ऑर्गेनाइजेशन डिमांड्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड CV, so this was a resume. In resume you can play around like this, but a CV should be to the point and should be neat and clean and should have it can be longer than 1 page. So ये मेरी 2 pager CV है। इसमें स्टार्ट मैंने एजुकेशन से किया हुआ है, देन देयर्स की प्रोजेक्ट्स, दीज आर द वर्क एक्सपीरियंस। अब इसमें मैंने स्टार अप्रोच डाला हुआ है, अगर आप देख सकें इसमें रिजल्ट भी है, इसमें मेरा एक्शन भी है। सो इसमें जो भी चीज़ आप मेंशन करेंगे आपका रिजल्ट उसमें होना बहुत ज़रूरी है, कि आपको क्या काम मिला एंड आपने क्या रिजल्ट प्रोड्यूस किए। ठीक है। सो इस तरह आप इसमें, अब इसमें मैंने सारे इटैलिक्स किए हैं तो सब में इटैलिक्स हैं, कंसिस्टेंसी आ रही है। ठीक है। देन कम्युनिटी वर्क, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सो ये सब आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। एंड सीवी में आप 2 पेज पर भी जा सकते हैं, बट रेज्यूमे शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 1 पेज ओनली। सो इस तरह की भी सीवीज होती हैं। एंड देन ये मैंने एक और सीवी बनाई थी, दिस इज फॉर यूनिवर्सिटीज इन यूरोप। तो ये आपकी ऑनलाइन एक वेबसाइट होती है यूरोपास की,
उसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं, वो सीवी आपको खुद ही बना के दे देता है। तो इस तरह और वेबसाइट्स भी होती हैं, ये तो यूरोप आज की है, और भी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें आप फीड करें एंड आपकी सीवी इस तरह की बन के भी आ जाती हैं, जिसमें आपको खुद डिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, वर्ड पे या कहीं भी नहीं बनाने की जरूरत। यू जस्ट ऐड योर इन्फॉर्मेशन और वो आपके लिए करके दे देती है। सो ये भी 2 पेजेस की है, और कोशिश किया करें सीवी 2 पेजेस से ज्यादा लंबी ना हो, क्योंकि जो भी एम्प्लॉयर होता है उसके पास कहा जाता है 15 to 20 सेकंड्स होते हैं आपकी सीवी को देखने में। अगर आप 15 to 20 सेकंड में उनको नहीं इम्प्रेस कर सके, आपकी सीवी नेक्स्ट पे चली जाएगी एंड देन यू आर लेफ्ट आउट। सो कोशिश किया करें जो बात लिखी हो टू द पॉइंट हो, प्रिसाइज हो और क्रिस्प हो। और ये वीडियो एंड होने वाली है, सो हम दोबारा ज्वाइन करेंगे, बट इसमें नया लिंक शेयर करता हूँ। बट फॉर फर्दर क्वेश्चंस बट रिगार्डिंग सीवी, मेरा मोस्ट ऑफ द स्टफ कवर हो चुका है। सो अगर किसी का क्वेश्चन है वो पूछ सकता है।